take few questions from comments and then we go to our co-host for questions. So Mushashi is asking any comments on Blackbox as a company. They recently guided for more than double in 3 years revenues. He's talking and margins to improve from 6 to 10%. See, Yeah. I'll say something. Definitely for certain period of time, you may see that playing out very well. द रीजन इज ब्लैक बॉक्स के अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो ऑडियो वीडियो का और आईओटी का छोड़ दो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इतने कंपनी को आईओटी और ऑडियो वीडियो में स्पेस बनाना और टू हैव दैट राइट टू विन इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, बट दे हैव प्रोडक्ट्स इन लेट्स से केवीएम हो गया, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेटा सेंटर केबलिंग वगैरह हो गया, और यहाँ पे स्पेंड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है अपने डोमेस्टिकली भी अगर हम लोग बात करें तो. सो नो डाउट यहाँ पे आपको स्पेंड्स हैं, स्पेंड्स काफी इजीली अवेलेबल है. बट देन इफ यू सी, यू विल फाइंड अ वेरी ईरी पैरेलल विद व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द क्लाउड एडॉप्शन. करेक्ट. सिमिलर गाइडेंस एक कंपनी ने दिया था, इंदौर बेस्ड कंपनी ने, इफ यू रिमेंबर, कि हम लोग हर 3 साल में हमारा टॉप लाइन डबल करेंगे. दे आर नोवेयर क्लोज टू अचीविंग दैट. हेलो, am I still audible? Yeah, yeah, please go ahead. There was some disturbance. I removed that. Yeah. या सो आई वुड से ये हम 3 साल में टॉप लाइन डबल करेंगे वाला जो नैरेटिव है, डोंट बाय दैट. बिकॉज 3 साल में इतना कुछ चेंज हो सकता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड अनदर क्वेश्चन टू आस्क इज, इफ दैट इज गोइंग टू हैपन, हाउ सून इज इट फैक्टर्ड इन द प्राइस. करेक्ट. सो यू ऑल्सो हैव टू सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि अगर 3 साल में यह टॉप लाइन डबल हो रहा है और ये टॉप लाइन डबल होने का जो भी मल्टीपल है वो मार्केट उसको आने वाले 3 से 6 महीने में दे दे रहा है. So what is the point of staying invested in that company for next 3 years unless it has capability to again double that from 3 years onwards? Correct. So I would say take it that with a pinch of salt. We have seen managements talk about similar, giving similar guidance and falling flat on the face because suddenly the overall adoption and the entire scenario has changed. और आईटी अभी फिलहाल इतना फ्लूइड है ना कि देखो 2020-21 में क्लाउड का एकदम सडनली था 2022 में थोड़ा सा ठंडा हो गया, सडनली 2022 के बीच में जनरेटिव एआई आ गया. करेक्ट. सो ये इतना फ्लूइड है ना सिनेरियो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी टू एक्चुअली से दैट वी विल डबल आवर टॉप लाइन इन 3 years. सो यू क्या होता है, आई टेल यू, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस when we did our initial spaces जब cloud spends काफी positive थे, strong थे. It's very easy to extrapolate demand in the future from what you are having at the moment. Correct. यही mistake frontline companies ने किया कि क्लाउड के स्पेंड्स ऐसे ऐसे हैं तो आने वाले 2 साल में भी ये स्पेंड्स ऐसे ही रहेंगे. बट ये जो वर्कलोड है इसका नेचर इटसेल्फ इज चेंजिंग. करेक्ट. सो अगर वर्कलोड का नेचर चेंज हो रहा है, सो देर आर प्रॉक्सीज दैट विल परफॉर्म बेटर देन द सम कंपनीज हु आर प्राइमरीली टॉप वर्किंग. सो इनिशियल जो वर्कलोड था वो आपका अभी वनीला हो चुका है. दोज ऑफ यू हु हैव वर्कड इन क्लाउड, राइट, सो यू नो कि इनिशियली जो स्टोरेज वाला सेक्टर था विद इन द क्लाउड, दैट यूज टू बी अ वेरी क्या बोलते हैं, काफी ट्रेंडिंग हुआ करता था, एंड इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम अ कमोडिटी. It got very difficult to find jobs in the cloud storage space. Correct. So you have to understand कि मार्केट किस तरह से चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप अगर आपका कंपनी स्टिल ये बोल रहा है कि 3 साल में हम रेवेन्यू डबल करेंगे, तो आई वुड जस्ट से कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ऑल्सो सी कि ये जो जो भी गाइडेंस दिया है वो कितना ज्यादा प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है. राइट. सो डेटा सेंटर में तो स्पेंड्स बहुत है प्रिंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. डेटा सेंटर एआई में स्पेंड्स बहुत है. यू हैव बीन मस्ट बी रीडिंग, लिसनिंग. गवर्नमेंट का मोटिवेशन है, विल है टू स्पेंड. देयर आर पीएलआई स्कीम्स कमिंग थ्रू. बट वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट ऑल्सो. There was a conference on the changing nature of cloud. I tweeted about it some months ago. जहाँ पे एयरटेल, सीफी और सारे जो बिग कंपनीज है हु आर वर्किंग इन द डेटा सेंटर स्पेस, those companies were actually participating, and the unanimous I would say acceptance by all of these big companies was हमारे यहाँ पे अभी जो डेटा सेंटर में जो the kind of workloads that we run, they are very generic cloud workloads. We do not have infrastructure available for to run advanced AI workload as of now. So naturally वहां पे एक थोड़ा सा पुश आएगा. करेक्ट. सो
काफी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सेक्टर में, बट जस्ट टू सम इट अप, आई वोंट बी सरप्राइज अगर 3 साल में इनका जेन्युइनली टॉप लाइन डबल हो भी जाए. प्रॉब्ली उसके पहले भी हो सकता है, बट देन प्राइस विल एक्चुअली स्टार्ट शोइंग यू दैट मच अहेड इन टाइम, सो कीप दैट फैक्टर इन माइंड एज वेल. Fair point. So, Ravi, you had your hand raised first, and then we can go to Vipinji, or maybe anyways, Vipinji can go first, or Ravi after, whichever way you guys want. So, hi, Ameya sir. हेलो So, रवि I भाई. had one question. One of the factors which you pointed out for identifying a proper business or a true, winning investment is to look out for companies which can go for scalability, right, sir? हम्म. But at the same time, sir, the very nature of technology is very fluid, and it's largely disruptive, and smaller firms have that relative agility to adopt changing technologies. So how to balance these two opposite poles, while we are studying any name? This is my first question, and then I will follow up with रवि भाई, another question. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई couldn't hear the last part of it. So the first thing was that, like, one of the key ingredients for identifying a proper business or investment opportunity is to look out for whether that company has scalability or not, right, sir? Hmm. Mm-hmm. And but the second aspect too is that, like, as the very nature of tech technology itself is highly fluid and dynamic, the smaller firms, they have that agility to adopt to any change much faster than the bigger ones. So how do we balance these completely polar opposites while we are studying a business? Hmm. It's not easy, to be honest. I'll be very openly saying the easy नहीं है ये चीज हम्म, को accept करना. जी 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 Uh, सर, जी सर। yeah, it takes. I mean, दोनों चीजें. ओवरऑल सेक्टर ही बहुत फ्लूइड है रवि सर. सो जी सर। सम कंपनीज मतलब जानबूझ के डाइवर्सिफिकेशन रखती है उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, सो दैट यू नेवर नो क्या क्लिक हो जाए. करेक्ट. हम्म बट देन हम्म इट्स नॉट लाइक अ पोर्टफोलियो. यू डोंट हैव अ, ठीक है, आपका होल्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप छोड़ दो, बट यू स्टिल हैव हम्म टू स्पेंड एंड इन्वेस्ट in all the capabilities that you have. So it's not हम्म that it's not that easy to actually strike that balance. It's an evolving thing to. That's why I say ना कि आप उस space में अगर जा रहे हो तो naturally you are हम्म looking in a small space. So हम्म everything actually depends on how promoter is executing the scheme of हम्म things. Correct. हम्म सो दैट्स व्हाई हम्म मेरा पहला बेट होता है प्रमोटर के ऊपर ही. बिकॉज बाकी का हम्म सब सारा कौन सा क्लिक हो जाएगा, वो एजिलिटी से कैसे उसको अडॉप्ट करना है, क्या करना है, ये प्रमोटर का हेडेक है. दे विल डू इट. सो इफ दे हैव द राइट डायरेक्शन, दे विल बी एबल टू हम्म फोरसी दैट मच अहेड इन टाइम कि क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है. राइट. So हम्म usually the easiest way where I find kind of a way out, I would not say find an answer, find a way out, is to just work and find whether the promoter is the right मुंह खोल के गाइडेंस दे रहा है, ये कर रहा है. अगर ऐसा कुछ है तो फिर आई स्टे अवे फ्रॉम द कंपनीज इवन इफ आई फाइंड पोटेंशियल. So that is हम्म probably my way of handling this हम्म imbalance. Yeah. हम्म। Not sure if सही है। that सो answers your question, but नहीं that's how I नहीं look at it. नहीं नहीं सर, लाइक द लाइक आप जिस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, लाइक वो आई कैन अंडरस्टैंड दैट डायरेक्शन, दैट जब एवरीथिंग इज वेरी फ्लूइड और वेग इन अ वे, सो जो बेसिक मार्कर्स हैं वी नीड टू फोकस ऑन दैट. So Hmm. yes, promoter is definitely one of them. And second, sir, like, I mean, for past quite some time, AI has been the buzzword for tech changes, and especially, like, if you look at US markets, tech stocks have led the entire rally in US markets for, like, I think for this entire year, if I'm not mistaken. So Hmm. do we have, like a couple of interesting names in Indian market which are directly or indirectly related to the same tech AI से related, sir, which we can See, study? I will answer it in two, I would say, categories. पहला है कि to be very honest with you, Mm-hmm. nobody from the listed company Space. space is doing anything meaningful in the AI. Okay, सब Oh. कुछ हर किसी को अपना सर्विस
जो भी मॉडल्स है उसके अराउंड रैप अराउंड करने हैं, एंड देन दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरीबडी. अभी आप अगर देखोगे, every company came out talking about how and what they are doing with generative AI, TCS, Wipro, all the Everyone, companies. yes they sir, yes sir. announcement आता है, circular आता है exchange पे. So what is happening at the moment कि अभी किसी को भी नहीं पता है कि इसको किस तरह से यूज करना है. अभी पायलट ही चल रहा है हर जगह पे. Correct? It's too early to say that कि this is going to be the next moment for us. It's too early. But what these companies are doing is कि जब डिस्कशन होता है एआई का और कंपनीज एसोसिएटेड विथ, मेरा नाम छूट ना जाए. सो एवरीबडी इज राइटिंग अ स्टोरी दैट ओके इस रेस में मैं भी हूं. सो ये सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये सिनेरियो है एक्चुअली. There are still some very small pilot implementations or deployments happening here and there, but this is not. हम वो बोलता है ना कि हमने अभी तक वो बैरियर तोड़ के मास अडॉप्शन के स्केल पे आने के लिए इसको स्टिल रिलेटिवली टाइम है. रही बात इसको किस तरह से प्ले किया जा सकता है, तो इसको हमने लास्ट फेज में एक बार टच बेस किया था, इज टू फोकस ऑन द कंपनीज हु हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड कंप्यूट ऑन अ डोमेस्टिक मार्केट बेसिस. सो वी टॉक्ड अबाउट इट. सो उसमें तो फिलहाल दो ही कंपनीज हैं जो 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 लिस्टेड हैं. डेटा सेंटर इज अनदर प्रॉक्सी. सो इफ यू सी द कंपनीज हु आर इनटू द स्पेस, जहां पे देखो एक चीज बहुत क्लियरली है कि कल को अगर एआई के वर्कलोड्स रन होने हैं डेटा सेंटर्स पे, तो द वेरी नेचर ऑफ द डेटा सेंटर हैज टू चेंज. ठीक है. अभी जो डेटा सेंटर्स हैं वो बहुत वनीला वर्कलोड के लिए, क्लाउड के जेनरिक वर्कलोड के को एग्जीक्यूट करने के लिए बने हुए हैं. बट जो एआई के वर्कलोड्स आएंगे, अगर पायलट भी होंगे, तो यू नीड अ वेरी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डेटा सेंटर. यू नीड मच एडवांस कूलिंग सिस्टम्स देन व्हाट यू हैव एट द मोमेंट. करेक्ट. यू नीड द जो शेल्फ को रीअरेंजमेंट्स वगैरह करते हैं, कॉम्पैक्ट डिजाइनिंग वगैरह करते हैं. You need much advanced level of cabling and the infrastructure deployments. So ऐसी कंपनीज जो ये साइड में भी कैपेबिलिटीज रखती हैं, वो कंपनीज यू विल सी दे सडनली आर डूइंग फार बेटर कंपेयर्ड टू द फ्रंटलाइन कंपनीज हु आर रैपिंग सर्विसेज अराउंड द जनरेटिव एआई. करेक्ट करेक्ट. सर, करेक्ट. सो ये एक डेटा सेंटर का एक प्रॉक्सी वाला सेगमेंट है जो हम प्ले कर सकते हैं. दूसरा, जैसे मैंने बोला कि कंप्यूट एक स्पेस है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो. लास्ट स्पेस में हमने बात किया था इनडायरेक्टली ईडीडी के बारे सर, में. लाइक नेटवेब रिसेंटली लिस्ट हुआ है. सो ओके, कंप्यूटर नेटवर्क. हाँ, सो ये स्पेस है जहां पे आप एक सेकंड प्रॉक्सी देख सकते हो. आई वुड से प्ले दिस होल थीम फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव रादर देन प्लेइंग इट थ्रू द फ्रंट लाइन कंपनीज में कौन क्या करेगा. बिकॉज एज ऑफ नाउ फ्रंट लाइन में सिर्फ ये हो रहा है कि वो लोग और कंपनी ये अनाउंस कर रहे हैं कि इस रेस में हम भी हैं. सो इट्स ओनली दैट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द स्टोरी. They don't know their path as of now. There are some deployments still happening. I'm not saying कि कुछ भी नहीं हो रहा है. But again, it's a service piece, right? So हर कोई similar circular लेके आया है. So who has a right to win in that case? It's very difficult to find out who has the right to win. Correct? सर, But हाँ प्लीज हाँ सर. हाँ, go ahead, go ahead. वो कंप्यूट स्पेस, लाइक कैन यू थोड़ा सा उस पे, आई नो दैट इट वाज कवर्ड इन द लास्ट स्पेसेस, बट थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं सर, बिकॉज या दिस श्योर. इंटायर देखो ऐसा स्पेस है इज कि लाइक. एआई के जो वर्कलोड्स हैं वो रिलेटिवली डिफरेंट इस वजह से होते हैं बिकॉज इस वर्कलोड में दो टाइप के वर्कलोड्स होते हैं. एक होता है आपका ट्रेनिंग, दूसरा होता है आपका इन्फ्रेंस. सो ट्रेनिंग जो होता है दैट कैन हैपन एनीवेयर बिकॉज उसमें जो लैग होता है उसका कोई कंसर्न लेना देना नहीं है. मतलब देर इज नो रीजन टू हैव नॉट हैव लैग इन द प्रोसेसिंग. सो थोड़ा बहुत लैग आप मैनेज करके चल सकते हो. सो दैट इज व्हाई यू हैव ट्रेनिंग एज वन एस्पेक्ट. एंड ट्रेनिंग मतलब ये किस चीज का, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं. सो ये मॉडल वैसे के वैसे उठा के आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो कस्टमर के साइड पे, राइट? आप और मोस्टली क्या होगा मैं बताता हूँ. आप ये सारे जो इवेंचुअली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो कंपनीज है और क्लाउड, गूगल क्लाउड, अमेजॉन, they will end up owning the majority of the large language models. Okay. These companies, IT companies, will not own any meaningful models, or probably they will not even come up with any model, genuinely speaking, because capability नहीं है उतनी अगर देखी जाए तो.
और सर्विसेज में इतना क्विक मनी है, यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम डाल के वो मॉडल को ट्रेन करो एंड देन मार्केट में लेके आओ, तब तक सडनली किसी और मॉडल का रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो व्हाट विल हैपन इज ये द ओनरशिप ऑफ दीज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विल स्टे विद द हाइपरस्केलर्स, and these IT service companies will then take these models, train those models on a specific segment, like आपको specific डोमेन में ट्रेन करना है, फार्मा में करना है, कंज्यूमर स्पेस में करना है, एंड देन अ टोन्ड डाउन कस्टमर स्पेसिफिक वर्जन का जो मॉडल है वो डिप्लॉय किया जाएगा कस्टमर के पास में। ओके, सो ये सारी चीजें करने के लिए, और देखो पोजिशनिंग भी समझना यहाँ पे जरूरी है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, टू ट्रेन दीज मॉडल्स ऑन अ वेरी स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर डेटा, एंड टू मेक एक्चुअली दीज मॉडल्स प्रोडक्टिव और यूजेबल इन अ लाइव सिनेरियो। हम सीधा सीधा ओपन एआई के एपीआईज यूज करके, इंटीग्रेट करके जेनरिक आप कन्वर्सेशन उसके साथ कर सकते हो, बट आपको अगर आपके बिजनेस स्पेसिफिक कन्वर्सेशंस करने हैं तो इट्स नॉट लाइक इमीडिएटली नहीं हो सकता। यू नीड टू ट्रेन दोज मॉडल्स ऑन द डेटा सेट, राइट? ये हो गया ट्रेनिंग का पार्ट। सो ट्रेनिंग आप कहीं भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर। आप यूएस के सर्वर्स पे ट्रेन करो, आप ऑस्ट्रेलिया के करो, इंडिया के करो, कहीं भी करो, बट इन्फ्रेंस जो होता है दैट हैज टू हैपन क्लोजर टू द कंज्यूमर, ठीक है? दैट इज व्हाई द एज प्रोसेसिंग और एज कंप्यूटिंग मैटर्स अ लॉट इन दिस केस। सो देन ये जो स्पेस है इन्फ्रेंस, यहाँ पे यू कैनॉट अफोर्ड डिले, बट उसमें भी दो सेगमेंट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन अ कनेक्टेड कार्स, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, और लेट्स से गेमिंग, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ये सारे सेगमेंट्स है जहां पे यू कैनॉट अफोर्ड एनी डिले। इट हैज टू, द इन्फ्रेंस हैज टू हैपन इन रियल टाइम। सो द कंप्यूट का जो रिक्वायरमेंट है, इन्फ्रेंस के का जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत हाई है, बहुत सिग्निफिकेंट है। बट अगर ये सेगमेंट्स छोड़ के आप बाकी के सेगमेंट्स में हो, तो वहां पे छोटा मोटा माइक्रो सेकंड का डिले इज स्टिल ओके, ठीक है? आई वुड नॉट से माइक्रो सेकंड, दैट्स एक्चुअली टू मच, बट लेट्स से 0.15 माइक्रोसेकंड टू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज स्टिल ओके। हाँ, सो ये दो पार्ट हो गया। सो यू हैव टू फाइंड आउट हु इज एक्चुअली वर्किंग इन दिस स्पेस एंड उनका टारगेट कस्टमर बेस क्या है, करेक्ट? सो हम लोगों ने सर्विसेज कंपनीज के बारे में बात किया, हु आर वर्किंग इन दिस स्पेस, हु आर प्राइमरली रैपिंग देयर सर्विसेज अराउंड इट, एंड दे आर currently just saying that we also have something to do in it. What? We don't know yet. Then you have these companies who are in the data center and who will actually have the physical infrastructure and capabilities for these advanced AI workload. And third, you have these compute companies who have the compute for these workloads, जहां पे ट्रेनिंग इन्फ्रेंस दोनों आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी दो ही कंपनीज है, अभी प्राइमरीली हम बात करें तो एक तो E2E है, दूसरा नेटवेब है। सो दोनों का पोजिशनिंग बहुत अलग है। E2E का ऐसा है कि दे डू नॉट हैव एनी ऑफ देयर ओन डेटा सेंटर, दे को होस्ट विद एंटिटी डेटा। सो ऑल ऑफ देयर सर्वर एंड ऑल ऑफ देयर प्रोसेसिंग कंप्यूट जितना भी है वो सारा एंटिटी के पास में होता है। दे कोलोकेट विद एंटिटी डेटा एंड वहीं से उनके एआई के वर्कलोड रन होते हैं। सो अगर वो कोलोकेट करते हैं तो ये डेटा सेंटर का जो हेडेक है, एडवांस वर्कलोड के लिए कूलिंग सिस्टम चाहिए, शेल्फ रिकॉन्फिगरेशन कैपेबिलिटीज चाहिए, ये सब एंटिटी विल टेक केयर। यू रियली डोंट हैव टू बॉदर एंड स्पेंड मनी ऑन डूइंग दिस अगेन, रीइन्वेंटिंग द व्हील। सो वो एक पार्ट हो गया। तो एंड देन अनदर थिंग इज, इन केस ऑफ E2E इट्स अ वेरी सर्विस काइंड ऑफ, तो ये इस स्पेस में कंप्यूट सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू द the GPUs that they own, A100 H100 के GPUs हैं। And again, in this space, for let's next year or so, GPU will not be a commodity, but there will come a time when GPU will become a commodity. Processing is a commodity, आप अगर देखा जाए तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं है, उसके वजह से उसको प्रीमियमाइजेशन हो चुका है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इसमें और अलग अलग कंपनीज के कंप्यूट आना शुरू होंगे, तो थोड़ा थोड़ा जीपीयू का प्रीमियमाइजेशन भी कम होना शुरू हो जाएगा। यू सी Amazon इज लॉन्च हैज ऑलरेडी लॉन्च देयर टू चिप, इन्फ्रेंसिया एंड ट्रेनियम करके, दोनों अलग पर्पसेस के लिए है, बट अभी तक उसको मार्केट में उतना ट्रैक्शन नहीं आया है। सब कुछ एनवीडिया के ऊपर ही रन कर रहे हैं। तो उस वजह से यहाँ पे राइट टू विन कहाँ से आता है? इस कंप्यूट के अराउंड आप प्रोसेसेस, टूल, प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटर्स किस तरह से बिल्ड करते हो? डू यू हैव अ प्लेटफॉर्म that makes it frictionless for your customer to actually let's take a generic model, train it, and push it through your productive environment? How frictionless can you do this?
यहाँ पे आपका सारा क्रिटिकल पार्ट जो है वो यहाँ पे है. सो ये हो गया E2E का जो प्राइमरीली दे हैव this compute available, GPU available through all these advanced GPUs NVIDIA के A100 H100. Second है NetWeb का. So to be very honest with you, I'm still trying to understand NetWeb's positioning. I have listened to all the possible videos. बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, but the problem क्या है ना, लोग सुपर कंप्यूटर NVIDIA इसी के बारे में बात करते हैं यार. आई मीन नोबडी एक्चुअली टॉक्स अबाउट एनीथिंग मोर देन दैट. मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी स्टार्ट हुई है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है? दे आर एक्चुअली पुटिंग डाउन एसएमटी लाइंस. एसएमटी लाइंस क्या होता है? ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसके ऊपर आप कंपोनेंट्स माउंट करते हो, सोल्डर करते हो बेसिकली. सो यू हैव एन आर्किटेक्चर which is provided by your top tier manufacturer such as Intel, Nvidia, AMD. You already have an architecture. You have, you know, all these different chipsets जो already architect वो print विंट होके आ चुके हैं आपके पास में boards. You are just mounting the components on top of it. So why are you calling yourself an OEM? So ये मेरे कुछ question है. I'm not negative on the company. Of course इस पूरे सेक्टर में गवर्नमेंट का विल है, स्पेंड है, PLI स्कीम्स अनाउंस की है, तो स्टॉक विल प्रोबेबली कंटिन्यू टू डू बेटर. But I find it very hard to see its positioning. How different are they from assembler -1? So assembler वो होता है ना कि जैसे आपको एक like early 2000 में आप अपने अगर कभी पीसी लिया होगा, assembled पीसी लिया होगा, तो आप किसी के पास जाते थे, वो बोलता था इसका चिपसेट लो, इसका मदरबोर्ड लो, इसका प्रोसेसर लो, इसका स्पीकर लो, इसका कीपैड लो, एंड देन यू हैव अ एंटायर वर्किंग सिस्टम. दैट वाज द असेंबलर. आप अगर असेंबलर -1 पे आ जाओगे, एक लेयर नीचे आ जाओगे, तो यू हैव कंपनीज हु हैव कैपेबिलिटीज इन manufacturing, but that's not a critical manufacturing. It's still associated with the assembly. Correct. So आप कंपोनेंट्स अगर माउंट कर रहे हो और आप खुद को मैन्युफैक्चरर बोल रहे हो, तो दैट्स नॉट अ राइट थिंग. ये जो इनका एसोसिएशन हुआ है इंडिया के साथ में, दैट इज फॉर द ग्रेस एंड हॉपर आर्किटेक्चर. एंड ग्रेस इज अ सीपीयू, हॉपर इज अ जीपीयू. ठीक है. सो ये क्या होने वाला है? ये बेसिकली दे विल गेट अ डिजाइन ऑफ द सर्वर अप्रूव्ड फ्रॉम एनवीडिया, and they will also source these components, and they will actually सर्वर. देखो सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं रवि भाई. आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में यू मस्ट हैव सीन दिस. आईबीएम के सर्वर के एक टाइम पे एड्स आया करते थे. करेक्ट. कि ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन वैसा है. सो डिपेंडिंग अपन आप कौन से डोमेन में उस सर्वर को डिप्लॉय कर रहे हो, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होते हैं. सो टेलीकॉम को लगने वाला जो सर्वर है वो बहुत अलग होगा, फार्मा को लगने वाला सर्वर है जो बहुत अलग होगा. राइट. सो उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे. So these companies, what they do is they take all these components from ऐसे जो भी top tier manufacturers हैं, Nvidia, AMD, Intel and all that, and then they basically configure and put together all these chipsets. They mount the components, they solder it, and they make a readily available sellable server. So to be very honest with you, how can you call them a manufacturer? They are not a manufacturer, right? So they are still an assembler, but not a vanilla assembler, assembler -1. So to be very honest with you, I'm still trying to study the positioning of this company, and I listen to all the videos and to get some direction from the management what they are up to. But they still keep on talking about, वो पूरा घुमा घुमा के बात करते हैं, and it's very difficult to actually draw anything meaningful from that. And but the point is, social media पे पूरा narrative है, momentum है, sentiment है, तो वही चलना है तो चलेगा. Sorry for the long answer, but this is how I could answer in the shortest way. No, sir. Pretty elaborate and informative, and काफी अच्छे से you have broken into different parts. And in fact, if we explore each part separately, there are decent opportunities of either screening out or screening in different businesses. So it was pretty informative and much needed, in my opinion. Yes, correct. Yes, correct. So Vipin sir, you were raising your hand. Yeah, go ahead, please. Prince, please, carry ahead. If like, I think I think Vipin sir has Vipin another sir has question. another question. हाँ, Vipin sir. Hello. Good afternoon, Ameya. हेलो विपिन सर. क्या हाल है? ठीक हो? बस बढ़िया. अच्छा, ऑल वेल आपने सर. नेटवेब के बारे में बात की, तो ये यहीं फरीदाबाद की कंपनी है जहां मैं रहता हूँ, और हाँ, मैंने आज okay. इसके बारे में पढ़ा. मैंने आपके ट्वीट के बाद
तो इसमें जो बेसिकली जो आपका कंसर्न है वो अभी आपने एड्रेस किया, तो वो मैं एक बार पता करता हूँ, क्योंकि जो इसके प्रीवियस ऑडिटर हैं वो ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, ओके, तो मैं एक बार उनसे पता करता हूँ कि ये क्या है। बाकी जो मैंने पढ़ा कंपनी के बारे में, ऐसी कोई मेरे को लगी नहीं कि ये प्रमोटर जो हैं बेसिकली दे आर नॉट वेरी हाई टेक सेवी, और जो कैपेबिलिटीज वो बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, मेरे को लग नहीं रहा कि जो आपने कंसर्न दिखाया कि मैन्युफैक्चरर हैं या ये सिर्फ असेंबलर हैं या कुछ, तो वो दैट इज नीड टू बी सीन। तो मैं इसके बारे में पता करता हूँ और आपसे कांटेक्ट करता हूँ मैं जल्दी, श्योर सर, डेफिनेटली। है ना। और अगर जरूरत पड़ी तो इनका प्लांट वगैरह अगर देखने का मौका मिला तो वो भी मैं देख सकता हूँ कि क्या फैंटास्टिक। हाँ जी, क्या करें। हेलो। हाँ विपिन जी सुन रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। थोड़ा एको आ रहा है मुझे। ओके, so प्रिंस से शायद if needed तो he'll visit the plant and get in touch with you. या यस। या Okay, so next in line is Farshad, you can unmute and ask your question please. Sure. Thanks, Ameya. Can you hear me? या लाउड एंड क्लियर। Okay. Ameya, first of all, thanks for sharing your knowledge. I'm a keen follower and always, benefited from your knowledge sharing. Okay. So, coming to the point. So, Ameya, I've been following some of the software product companies very closely. So, wanted to know your point. So, for a typical software company, I mean, let's take Newgen just as an example. For the short to medium term, how do you track its progress? I mean, like number of new logos, the ARR growth, the GSI partnerships, etc. So, what are the key things that you track from a short to medium term perspective? And just a follow up to that, from a long term perspective, ideally, how do you want your software product companies to evolve? And again, taking Newgen as an example, these are FSI specific financial services heavy company. So, would you like these to again, this is capabilities versus scale question, right? Would you like these companies to develop the capabilities under the FSI space and go more in depth? Or do you want ideally your software product companies to expand the industry use cases so that, they become a little bit not too much dependent on, one industry? So how would that ideal scale up from a long-term strategic perspective would be? So yeah, this was, pretty much my question. Very interesting question. More than happy to share my thoughts on it because I exactly played Newgen, through the same thought process that you're having at the moment. Yeah. See, first of all, I would say product company का जब आप बात करते हो तो to be very honest with you, I don't really look at a very short term kind of a perspective जहाँ पे new wins कैसे आ रहे हैं, logos क्या है, because it's an evolving space and product को एक certain shape and साइज में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? यू I when I was running my own startup, I had a product and then I'm coming from that background, so आप अगर जब भी कभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओगे तो नेचुरली आपको लगेगा कि यार, if you come from a software engineering background, you will think that what a wonderful product I have, and you will try to convince your customer का परसेप्शन उस प्रोडक्ट को लेके कंप्लीटली डिफरेंट होगा, एंड कस्टमर विल प्रोबेबली कंप्लीटली डिस्कार्ड इट, करेक्ट? सो ये एक इवोल्यूशन के फेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके, बाय ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके उस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मार्केट फिट फाइनली आता है, राइट? दैट्स व्हाट द होली ग्रेल इज इन द प्रोडक्ट कंपनीज, करेक्ट? टू फाइंड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, करेक्ट? सो दैट्स वाई एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आप उसको इवेल्युएट कर ही नहीं सकते हो। आपको ये देखना है कि इन लोगों का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, और इस किस तरह से इन लोगों को ग्रो करना है। सो आप अगर न्यूजेन का एग्जांपल देखोगे, सो देयर वाज अ फेज व्हेन उन लोगों का शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ था, लोगोस भी ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे, बट दे हैड दिस विजन कि हमको इस स्पेस में रहना है। और लाइक आई सेड, इन लोगों का मोट कभी भी उनके इनिशियल टाइम पे व्हेन दे हैड देयर प्रोडक्ट्स एंड
उनके सारे प्रोडक्ट्स इनिशियली एज प्रोडक्ट्स थे. एज प्रोडक्ट्स मतलब it was not very difficult to replace that product from some other product from competitors, right? It was not very difficult to do that. ये सारे इजीली रिप्लेसेबल प्रोडक्ट्स थे उनके. इफ यू सी, बट दो चीजें होती हैं. एक तो फाइनेंशियल में इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप मतलब इवन दो टेक्निकली इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस अ प्रोडक्ट, बट यूजुअली इतना ज्यादा इजीली होता नहीं, बिकॉज देयर इज सो मच ड्यू डिलिजेंस एंड अप्रूवल्स दैट गोज थ्रू, राइट? सो इतना ज्यादा इजीली चेंज नहीं होता है प्रोडक्ट. सेकंड चीज ये था, इन लोगों का जो एसोसिएशन था, और अदर है, GSIs के साथ में हो गया या फिर जो कंसल्टिंग कंपनीज के साथ में हो गया, दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी, right? So again we are back to that point, and scale and credibility को छोड़ के then we'll little bit move ahead and talk about credibility and capability, right? So you, आपके पास capability है but credibility नहीं है, तो that capability is of no use, correct? So you have to see as a product company what you are chasing first, and that's where the answer to your second question lies. So, and I'm nobody to answer that, because every product company has their own roadmap. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको एक सर्टन सेक्टर में फ्लाईव्हील इफेक्ट चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज पिचिंग माय प्रोडक्ट टू HDFC लाइफ, नो सॉरी, HDFC अर्गो, आई अंडरस्टूड दिस एस्पेक्ट दैट टाइम. ये एस्पेक्ट मुझे तभी पता नहीं था फ्लाईव्हील इफेक्ट का. सो इफ, एंड दैट्स हाउ द कंपनी स्टार्टेड निगोशिएटिंग कि आप ये प्रोडक्ट मुझे फ्री दो, आई विल लेंड माय लोगो टू यू, एंड देन there are small players जो blindly हमको follow करते हैं, because we are leader in certain sector. People blindly follow कि अरे इसने ये product लिया है ना, कुछ सोच के ही लिया होगा, कैसे use करेंगे पता नहीं, but let's just have this product in our portfolio. So you will actually have lot of companies coming up and buying this product from you. So that used to be the use case. So कुछ companies होती हैं जो जो अपना product उस तरह से एक्सपांड करना चाहती हैं. सो हर किसी का गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. So we cannot really draw a generic conclusion that I want this company to achieve a scale, I want this company to achieve a depth. It's very very specific. And then if you're operating in the BFSI space, then to fir compliances and then due diligence, this all things make it very difficult to change a course of the flow of things that you are executing, correct? So that is why what matters in such cases, वो product किस तरह से evolve हो रहा है. If that product used to be initially very easy to replace, but you got your right to win was because somebody else who brought in more credibility did the due diligence for you, and that is why you went ahead with that product. Otherwise product अगर standalone basis पे मेरे पास आता तो मैं शायद नहीं लेता, राइट? ये आपका इनिशियल पोजिशनिंग था. वहां से आप अगर पोजिशनिंग धीरे 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 करके थ्रू प्रोडक्ट फीचर्स, इफ यू आर एबल टू गेट टू अ पॉइंट जहां पे आप आपके GSI को या कंसल्टिंग पार्टनर जो भी उसको बोल रहे हो, या दिस प्रोडक्ट आई लाइक वेरी मच, कैन यू डू अ ड्यू डिलिजेंस ऑन दिस प्रोडक्ट? सो जो पहले आउटवर्ड इन अप्रोच था जिसके बेसिस पे आप ग्रो किए, कैन दिस टर्न अराउंड फ्रॉम इनवर्ड आउट? And if that happens, that is voila, then you have really found a very good company. And again, that's why ये promoter किस तरह से product को evolve करना चाहते हैं, it again comes down to that level. And that's where I think Newgen was it has now turned around from outward into inward out. So I hope I answered your question. Yeah, definitely. Ameya, this is what I was looking for. So pretty much we need to keep an eye on, how much they are building credibility in the industry, the stickiness, the type of logos, even if not number of logos, because as you rightly mentioned, once you get a big customer who is pretty much a leader and who others follow, if you regain, multiple such leaders in multiple geographies, that will bring in the flywheel effect as well. And obviously, हाँ, I will also give you one more example on this. ये specifically intellect design के केस में हुआ था. Intellect has a very very strong product portfolio. ये बात अलग है, थोड़ा सा management के वजह से I have been not that keen on the stock. But if you look at their product portfolio from a standalone, disconnected with management, you see कि बहुत अच्छा product, बहुत strong robust portfolio है. Probably way better than what other companies have on the block. But then again, हुआ क्या ना, जब when Intellect was actually going through that exponential growth phase in 2021, a lot of smaller companies also bought the product from Intellect. So आप अगर देखोगे ना, बहुत clearly fine print आपको दिख के आ जाएगा. लाइसेंस रेवेन्यू वाज, मतलब जो था ना वो बहुत अमेजिंग था, लेकिन लाइसेंस रेवेन्यू होने के बाद में उसका एक
सेकंड फेज भी आना जरूरी है ना, इम्प्लीमेंटेशन का रेवेन्यू आना जरूरी है. लाइक 3 पार्ट में रेवेन्यू आता है प्रोडक्ट के लिए. सो सेकंड पार्ट का जो रेवेन्यू है वो आना जरूरी था, बट दैट एक्चुअली आप अगर कंपेयर करके देखोगे लाइसेंस रेवेन्यू के साथ में, तो कुछ तो वहां पे मिसिंग था. एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड दैट सम ऑफ द कंपनीज still went ahead and bought the product and licensing from Intellect, but they never actually ended up implementing it, right? So ऐसा भी होता है. Great. Thanks, Ameya. Very helpful. Helpful. Prince, can you give me just like 20 minutes? I'll get some water and come back. Sorry, 20 seconds. 20 seconds. Please, yeah, all the time is yours. Just 20 Meanwhile, seconds. just 20 Yeah, thank you. seconds. Yeah, thank you. Sure. And for our audience, just in case you want to ask the questions yourself, you can send in a speaker request, or otherwise you can simply type in the question in the comments or maybe DM me. So happy to take appropriate questions. And I also see Sajal sir, although he prefer to be a listener when somebody is having a dedicated spaces. So just in case, sir, any questions on your part or you wish to join, so would be happy to have you. Thanks for acknowledging. And Ramanjit, also you had few questions as we were discussing. So in case you wish to join, or you can simply write in your questions to me. Meanwhile, let me check the comments and read out the questions. I am back, I am Prince. back, Prince. Yeah, great, Ameya. Yeah, Ravi, you can go next. Meanwhile, I'll explore other questions in the comments. Yeah, hi, Ameya sir. So, I mean, those who know, they know that you have quite an eye for other sectors as well. Even though your name is pretty much established for tech, but for other sectors also, you have a very keen, good eye. So, can you point out some other pockets of opportunities, yeah, like undervaluation where one can look at right now? नहीं नहीं रवि सर, यू आई थिंक यू जस्ट you नहीं, ऐसा नहीं है. I don't follow other sectors that strongly, to be very honest with you. I listen to people who are expert in those sectors. जैसे जय हो गया chemicals में. Then there I have another friend in chemicals, रवि शाह करके. I don't know whether you know him. सो मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ. अपने सजल सर हो गए फार्मा में, आदित्य की स्पेसेस भी बहुत अमेजिंग है इंश्योरेंस स्पेस में. सो आई कीप ऑन फॉलोइंग दिस पीपल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, I cannot create a position that is meaningful based on anybody's understanding of the sector, and it can be very well true for others when it comes to technology. हाँ, कुछ कंपनीज हैं जिनकी साइकिल में पिछले कुछ 10 या 12 साल पहले के साइकिल में मैं उसको प्ले कर चुका हूँ. जैसे मेटल का साइकिल था या क्रूड का साइकिल है. I played those names historically and I ended up giving all the gains back to the market. And that's when I understood कि अरे ये इस तरह से साइकिल चलती है. तो फाइनली तीसरी साइकिल में मैंने मेटल और क्रूड में पैसा बनाया. पहले 2 साइकिल में ये हुआ कि पहली साइकिल में तो मैंने गेन बनाया एक्सपोनेंशियल, बट मैंने वापस दे दिया बिकॉज मुझे नहीं पता था कब एग्जिट करना है. तो पहली साइकिल ने मुझे ये सिखाया कि कब एग्जिट करना है, बट दूसरी साइकिल में आया, मैं एग्जिट किया, बट देन अलोकेशन नहीं था ढंग का, तो कोई मैटर ही नहीं करता है. तो ये तीसरा फेज है जहां पे फाइनली मुझे लगता है मैंने ये मेटल और क्रूड के स्पेस में पैसा बनाया, बट दैट्स हाईली साइक्लिकल. And that's only because I have spent that much time in the market and have seen it and given back money twice to the market. Only because of that I have made money so far. But other than that, to be very honest with you, I don't venture in the sector which I really don't understand very well. मैं सिंपल सा ये सवाल पूछता हूँ, ऊपर जाते टाइम क्यों होल्ड करना है बहुत इजी होता है, बट नीचे जाते टाइम क्यों नहीं बेचना है, इस चीज का अगर आपके पास आंसर है ना, तो आपने उसमें बने रहना है. Very, very interesting Very interesting. perspective. So, अमेया भाई, there are few question on rate gain और कुछ comment भी आ रहे हैं कि हिंदी में more people are comfortable, although bilingual is always good. So, as per rate gain management, the total addressable market is north of $10 billion,
and they didn't even scratch the surface so far. Do you have any perspective here, and can they achieve 30% sustainable ROCE eventually, which is common in SaaS businesses? हाँ यार, मुझे लगता है उनका मैनेजमेंट काफी केपेबल है. सो इफ यू सी ना, I'm not able to recollect the name. Was it Adara that they acquired and turned around completely? I don't know. I don't know. US में US में no idea. Maybe that was US में एक the बिजनेस US में उन्होंने एक business. एक्वायर किया था. And so what happened is, वो जो business था, that was actually going through a very very rough phase and they were near bankruptcy. So they acquired that business and they turned it upside down, and that business is highly profitable now. So वो एक एस्पेक्ट मुझे RateGain के मैनेजमेंट का बहुत अच्छा लगता है. So if they are able to repeat this performance with more companies down the line, but again we have to see that from a context कि कोविड हुआ था तो उस वजह से बहुत सारी कंपनीज लॉस में चली गई थी सडनली, ट्रैवल कंपनीज. So it was easy to find a value buy back then, but probably it will not be the case anymore. But management में capabilities बहुत अच्छी हैं, to be very honest with you. I haven't studied the ट्रैवल टेक सेक्टर उतना ज्यादा अच्छे से मैंने नहीं स्टडी किया हुआ है. सो आई कैनॉट रियली कमेंट कि इसका स्केल बिजनेस साइड से कितना जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट इज वेरी केपेबल. And if they are able to repeat such executions, even though they pay a little bit premium, but then they are able to scale up that acquired business further, broaden up their offerings, then why not? They should be able to continue to do better. But sorry, I can't But share sorry, I more can't insights share more because मैंने insights बहुत because मैंने closely बहुत उस closely business को उस study नहीं business. किया है. Right, Ameya. In fact, In Prince, fact, अपने अंकित भाई है ना, अंकित कनोडिया, he has studied this business very closely. So maybe if somebody wants to, read a little bit more about the business, then they can check out. yes, rightly said. So next question is from Gaurav Patil. He's asking, since Ameya talked about flywheel effect on product companies, so Pricol has Sibros for automotive telematics analytics. Any view around this? No, yeah, no view. I haven't studied this sector, this side. ये telematics and then ये काफी different sector हो जाता है. It's in little bit part of ER&D but still not. It's mainly automotive side का है. So युष्मो इतने काफी अच्छा एक वीडियो इसके कॉल के ऊपर किया हुआ है. So you know why not go and watch that. Right. And Gaurav said it is Adara. You were asking about, right? अडारा ही था ना? Yeah, Yes, yeah, yes. right, right. So Bhaiyaji is asking, although Alitech you have already discussed, yeah. So Nagarajan is asking, please help us with few pointers on the basis of which we can understand the prospect of Onward Technologies. Yeah. So there are two things. First is again management's capabilities. ये बहुत important है. Jigar Mehta is a second gen entrepreneur. But what is more important is how is he is changing the business. So before Jigar, his father was actually doing business that was primarily domestically focused. But now he has come in and he has changed the direction. He's focusing more on the international business. So देखो ऐसा है कि इंटरनेशनल बिजनेस इज नॉट दैट इजी टू क्रैक. दे हैड हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेस विद टाटा. काफी काफी इजी, बैठ के चलने दो टाइप्स बिजनेस था वो तो, बट दे लेट दैट गो. And now they are very aggressively trying to create footprints in Europe and US for their ER&D businesses. They have a pretty good industrial manufacturing process know-how as of now. So what they are doing is now they are trying to create a digital service offering out of their business understanding of these sectors, correct? And that is how they are trying to position. And it's position create करने के लिए you need people, right? People who have worked in, let's say, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग वर्टिकल्स को उन लोगों ने हैंडल किया हुआ है. सो दे हैव हैड a huge product portfolio under them in the erstwhile companies. So usually ऐसा होता है, if you hire a talent, uh, that person is able to somehow get some more customers
maybe not for the immediate future, but maybe a little bit further down the line, you're able to win some more logos. You're able to bring very specific people who are working in that domain, that industry. So that's why the positioning create करने का पहला step ये होता है कि you need to have right people leading the right channels. Correct. So they are creating this sales and marketing funnel in US, Canada, and Europe as of now. They are also able to somehow, I don't know how he's able to do that, but they are able to hire people from likes of KPIT, LTTS, ELXSI. And I have seen people actually go from these companies and join Onward Technologies. So similar trend we had seen in the KPIT people, from the top tier ER&D companies, they were joining KPIT like a couple of years ago. And then KPIT did phenomenally well in some certain sectors. कभी कभी ऐसा होता है ना, वो लोग कैपेबिलिटी भी लेके आते हैं, उस सेक्टर का एक्सपोजर भी लेके आते हैं, उस सेक्टर में क्रेडिबिलिटी भी लेके आते हैं. सो यू हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग दिस एस्पेक्ट वेरी क्लोजली विद सच कंपनीज. If you find a very credible name joining a company, then you can actually see ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है आगे जाके. करेक्ट. सो ये एक पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा ऐसी कंपनीज को ट्रैक करने का ट्राई करता हूँ. And then based on that you keep on listening to the con calls and you see क्या होता है. जैसे एक recently एक similar change हुआ था Persistent की केस में, right? This person, Dr. Rajesh Garpure, used to be a very, very senior person in L&T Infotech when I was working there. And he was very, very senior, was managing lot of big portfolios for very big logos. And he joined Persistent as a chief delivery officer. Yeah. So naturally आपको पता है Persistent में there is a change in management eventually, जो already हो चुका है, but आगे भी जाके होगा. So they are able to bring such amazing people who again come in, bring in little bit of diversification, little bit of different thinking in the company. They are able to create the positioning for you. तो ये जो people movement aspect है, ये usually मैं track करता हूँ, if you see. So Onward के केस में they are able to generate POs, purchase orders, from some of the big customers here in Europe and US. But then again, you have to understand one thing very clearly, that purchase order not necessarily translate into a sales order and the invoicing to the customer. आपको 100,000 का purchase order create हुआ रह सकता है, but you don't really bill customer for 100,000 worth immediately. It's just a purchase order. Correct? So it's just a contract that says कि यार सब कुछ सही गया, मेरा डिमांड सही रहा, तो there is a possibility that I will do a business worth 100K from you, with you. ओके. तो जब भी कभी कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, आप एग्जीक्यूशन करते हो, आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट, मतलब लाइक सेल ऑर्डर होता है आपका, एंड देन यू डू द इनवॉइसिंग टू द कस्टमर बेस्ड ऑन द वर्क दैट यू हैव डन. इट कुड बी फॉर $10,000, इट कुड बी $50,000, एंड इफ इट गोइंग अबव 100K, you ask for another PO. Correct. So PO मिलना is not synonymous to उतने का बिजनेस आया है. PO मिलना is like a foot in the door, कि आप आ चुके हो यहाँ पे. Now it is your capabilities and your execution that will define यहाँ से ये चीजें कहाँ जाती हैं. So ये एक aspect है जो मैं बहुत closely track करता हूँ, and for that you have to join the con calls and ask these questions to promoters, that hey, how your existing POs shaping up with some of the big customers. Are you able to get another PO? Are you able to invoice your customer one-on-one, 1:1? How is it going? So you get that kind of a flavor and direction from a management, and then you, based on that, you take your study further. But again, as I said, इसमें transition हो रहा है, तो short term में इसको किसी तरह से judge करना बहुत difficult है, right? And the reason recently ये जो stake sale वगैरह का हुआ है, the way I see it, ये Newgen में भी हुआ था. If you see, the way I see it is, he is trying to bring some credibility through these big fund houses on the table. But let's see how this develop. So I hope this answers your question. So let me, okay, Ramanjeet is here. So Ramanjeet, you can unmute and ask your question, please. Yeah, hi Ameya. Hello, sir. How are you? I'm good. And
Okay, I just wanted to check what do you think about Sonata Software's AI for it. They have Harmony.ai, and I think I don't know, they add another layer to Microsoft Fabric product, because I could see that in last couple of months they did announce some AI related deals. हम्म। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का एडॉप्शन नहीं है सर मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. I know that they are the only vendors offering this service capability in the market as of now. But वो करके फायदा क्या है if there is no demand, right? So वो एक concern है. So if you check very closely with the sector and all that, you will see कि Microsoft Fabric का उतना ज़्यादा demand अभी तक create नहीं हुआ है. So nobody really knows कि इसका scale क्या है. I know they are offering Harmony.ai and but एक चीज आप अगर देखोगे सर जी, तो they have very categorically mentioned when it comes to the positioning of Harmony.ai is they are not in the space of building a LLM. They are building a bunch of services जिसके अराउंड दे आर बिल्डिंग सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स. दे आर रैपिंग देयर सर्विसेज, उसमें इंटीग्रेशन सर्विसेज आएंगी अराउंड द एलएलएम्स, specific to the industry and specific to the customer. Correct? So Yeah. that's all that they are trying to do in the Harmony.ai. It's उसको सिर्फ उन्होंने एक प्रोडक्ट नाम देके रखा है, but they are doing the same thing that Wipro is doing, that same thing HCL is doing. तो उसमें कोई ऐसा बड़ा राइट टू विन है नहीं. सेकंड बात ये है कि इन लोगों का जो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक है उसका अगेन आई विल कम दैट देयर इज नो स्केल, नोबडी नोज व्हाट इज द डिमांड आउटलुक फॉर दैट. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं सर मार्केट में, बट अगेन प्रोडक्ट फेल होते हैं, अपटिक नहीं मिलता है. सो आई विल नॉट रीड टू मच इनटू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. But there is very good development happening within this space, but unfortunately I cannot speak about it because it's uh, क्या बोलते हैं, industry specific know how है. So but yeah, company is good. It will continue to do good. They have expanded their product portfolio from the payment space to other industries, and they will continue to do very well. But ये AI Harmony.ai की specifically अगर हम बात करें तो it's one and the same thing. We don't know what Microsoft Fabric is either, to be very honest, at this moment. Nobody knows the scale and demand outlook. Right. And recently they had announced one partnership with, I think, Ameya Group for power transmission, and they, they are for the power transmission. So do you see Sonata has any play into this power infra or slash big नहीं सर, infra? अगर ये स्पेस मुझे प्ले करना है तो आई वुड probably go with companies like Cyient, Right. or a little bit into, let's say, companies like Hitachi or Schneider for that matter, right? Who basically are able to bring in both sides into one place. सॉफ्टवेयर स्टैक भी है आपके पास में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है आपके पास में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस भी है आपके पास, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी है. I would rather go and play it through Schneider than playing it through like of Sonata. और मुझे अगर स्पेसिफिकली एनर्जी एंड पावर सेक्टर को ही प्ले करना है तो आई वुड रादर प्ले इट थ्रू Cyient than playing it through Sonata, to be very honest. Because Cyient के केस में they have a very specific specialized focus capabilities into the power and energy sector, जो सोनाटा के पास में नहीं है. सोनाटा एक पेमेंट्स एंड बैंकिंग स्पेस में से, पेमेंट स्पेस में से प्राइमरीली बाहर आके दे आर नाउ एक्सपांडिंग. सो पावर तो बहुत अलग सेक्टर हो जाता है सर. सो इट्स बेटर टू प्ले with a company who has a vertical depth in a given sector. So if you are playing energy and power from the software perspective, I would still go and play it through Sonata through Cyient, and rather than playing through Sonata. Okay. So I think I asked you this when we met at Delhi as well. Since you named Hitachi and Schneider, so Amir, the only issue in those MNCs kind of companies that you do not know which service or product or Yeah, solution yeah, is yeah. under I agree. listed and then is unlisted. If you, I'm sure you go through the con calls, and there are a lot of नहीं, questions regarding this. मेरा भी अंडरस्टैंडिंग आपके जैसा ही है सर. यहाँ पे ऐसा नहीं है. So how आई do नो you एनीथिंग मोर देन reconcile with दैट. this? Yeah.
As in, if you invest, then how do you, as an investor, how would anyone would it be like, then don't go there, or नहीं, how do you डोंट गो देयर discount की for तो this? बात नहीं है. सो इसी को हिताची के का केस तो थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट हिताची फॉर अ लिटिल बिट while for obvious reasons. But when it comes to Schneider, see, one thing is very clear. तो आप देख कैसा होता है ना सर, इंडस्ट्री में होने के वजह से कुछ चीजें पता चलती हैं, जैसे कि कंपनीज अगर अपना फोकस चेंज कर रही है कि जिस तरह से एज अ पेरेंट कंपनी कौन सी सर्विसेज उनकी लिस्टेड कंपनी है उसके थ्रू ऑफर करना चाहती है, तो यूजुअली क्या होता है ना, इन लोगों के ईआरपी स्टैक बहुत डिफरेंट होते हैं. करेक्ट. दे डोंट यूजुअली want these companies to share the data from the silos or within the silos. तो वहां पे ऐसा एक चेंज मैंने देखा था कि the parent company was very keen to kind of integrate and merge the services that Indian company was offering into their existing ERP stack. So that kind of gave a trigger to me to understand कि usually ऐसा नहीं देखा जाता है बहुत ज्यादा. इवन दो ग्लोबल टेम्पलेट होता है, एंड देन हर कंपनी का अपना अपना इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सर्वर सेटअप होता है, इंडिविजुअल रोल आउट होता है, ये सारी चीजें होती हैं. बट अगर आपका बिजनेस एंटिटी ही टोटली डिफरेंट है, तो वो केस में यूजुअली कंपनीज प्रेफर टू हैव सम बाउंड्रीज इन सर्टन बिजनेस प्रोसेसेस. सो आपको अगर वो बाउंड्रीज किसी भी तरह से थोड़ी बहुत भी ब्रेक होती हुई दिखती हैं, तो इट शुड ट्रिगर एन इंटरेस्ट की एक हो क्या रहा है. So I saw a similar implementation in that space probably 7 or 8 months ago, in case of Schneider. And then I started reading about how management is positioning, and then I understood ki they are very very positive on what the infra spend and all these things are happening in India. So maybe more and more product will come through the Indian entity. बट अगेन दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर. ये एमएनसी फार्मा के केस में भी काफी मेजर प्ले आउट होता है. बट ऐसा नहीं है कि यू कैनॉट प्ले इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. सो ये थोड़ा सा इंडस्ट्री नो हाउ के वजह से आई वाज लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन स्नाइडर. बट दैट रिस्क, एमएनसी का रिस्क इज ऑलवेज देयर. यू नेवर नो किस चीज का रेवेन्यू पेरेंट कंपनी कंप्लीटली अपने पास लेके जाए और जो लिस्टेड एंटिटी है उसके पास में कुछ भी ना बचे. दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर. You have to invest with that perspective. That's so the only thing you can control that risk is through position sizing and knowing, having an exit very clearly on mind. Not necessarily business exit, because a business exits lagging nature होते हैं. So in that case technical exits भी काफी सारे लोग लेते हैं. So either have something of that sort. So see, you cannot have clarity on all the sectors at all the time, or even एक सेक्टर आप समझते भी हो तो उस सेक्टर में सारे इन्वेस्टमेंट्स में प्रोबेबली आपको यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल द कंपनीज, राइट. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इट कुड बी because of multiple reasons. It could be because of technical reasons. So you need to have exit criteria also aligned to that reason. So next in line is educated guest. So you can unmute and ask your question, please. Hey, thank you for bringing me on the stage. My name is Umesh. I'm based in London. Exactly. And I have... Sorry, can you hear me? Yes, Oh, okay. I can. Sorry, because there was a little bit of noise, so I thought... okay, sorry about that. Yeah, so I'm from India, and I'm definitely interested in how AI, or rather machine learning, we are still not at AI, that's a different topic for a different space, is developing. And I've been keeping track to see as to where we'll be going and everything. So a couple of questions, Ameya, and I really, really like your takes and everything. So I've been attending quite a few. I've been reading everything that you post and everything, and it's very, very interesting takes. So thank you for that. So there are two questions. One question is specifically in the machine learning or application of machine learning in the form of AI in various enterprises. I despite trying very hard, I found a lack of ecosystem. So maybe I'm missing out something.
there is a lack of ecosystem. So what do I mean by that is, in terms of research, specifically for the Indian ecosystem, number of papers coming out of India, Absolutely. which is missing. Compute power is missing currently. So we are really lagging behind in terms of what is happening in Europe, for example, in London Yeah. or in Paris. And if you really look at the papers coming out of the US and even from France, you will see one or two Indian names always in those papers. So it's not like we lack brain power. There is something else which is lacking, and I'm really surprised that like how is it getting Yeah. addressed, right? And second question I have is about the impact on the traditional IT companies that we have in India in terms of their offshoring services that they are providing. I'm seeing a significant kind of a change in attitude, especially in Europe, because of the Yeah. evolving coding tools and automation in the coding space, which is going to reduce the reliance on human powered coding actually. And Yeah. I'm a catalyst because we are implementing a lot of those solutions for large enterprises in my own company, and I'm seeing that shift. So, what do you think will be impact Right. on the traditional IT sector? Wonderful. So I will just share what I see. And since you work in this space, probably you will know a thing or two better or more than I do. So one thing I completely agree with you, we lack ecosystem, and there is a reason to it, because right from the day we get into engineering, our mindset is to basically get into services, right? So all the offerings is around the services, and that's precisely why the spend and the willingness to have in-house research and all that, that's not happening anywhere. It's a quick turnaround. If you have a service, you can the revenue cycle is very short, so the companies are not really keen to invest into that. I know all the companies have smaller practices in the research, but to be very honest with you, actually indeed nothing is coming out of it. And that's why the way I see it is, all these Indian IT companies will eventually again become only service providers, probably wrap some services around, or somebody else who has built it, some other products, and they'll just create a service model around it, and they'll try to sell it. That, let's say for example, somebody is a ServiceNow partner, and somebody is also, let's say, OpenAI, a Microsoft partner. So through Azure OpenAI services, I will integrate ServiceNow. I'll bring in, let's say, a very automated kind of a test management solution for you. Probably that's one of the use cases, but again, it's a service, right? You're not building, you're not ideating anything as such. You are just putting two three pieces together, and you are creating a service around it. So I don't think that's gonna change. Also, I think it's also about the lot of talent uh, who either prefers doing research, or has any interest. That could be because of money or whatever reasons. They are either located out of India, or all these big startups, they have actually scooped up these people. And what is left with the Indian IT services is whatever is after that. So, I mean, I have high regard for the IT services because I also work in it. So, but that's the nature of this industry, and I don't see that changing, to be very honest with you. And I agree with your first question fully. We will probably see, the similar trend continuing. Coming to the second part, I actually see this happening in Europe very aggressively. So I happen to be privy to one implementation here for one of the big retail companies, and they had for a very specific uh, business function. They had like a team of 40-45 people, out of which 30 were developers. And I always thought they probably overhired, and then some time down the line they'll probably ramp it down. And to six, there architect, then there are like couple of senior developers, and then that's it. I mean, this layer, the bottom layer, where you had lot of commoditized repetitive coding required, that is getting obsolete completely.
So, and that will happen. I have absolutely no doubt about it why it shouldn't happen. And in certain industries, it's not that difficult to replace, right? Replace your workforce. I think today itself, Paytm also announced that they're letting go some 100,000 people, something of that sort. The companies are slowly taking certain pieces of these entire technological moving part into their own. The companies also have GCCs, right? So through which they are probably taking this part in their own hands. I have seen this increasingly happening. Also in Netherlands, I work with a consumer electronics company, and they kind of turned it around. So they had technical workspace working with them, then they sold everything to Wipro, and suddenly in last 6 months they have again started creating their own developers ecosystem, but it's like a very very toned down version from what they had earlier. So I only can concur with what you are seeing here, Umeshji. But it is what it is. And just can I ask you a small follow-up question? I don't want to hog the stage, but just want to ask a follow-up question. Yes, sir, please. So, like, if you were to, from an investor point of view, because I'm a big investor in India, and I really believe that we still have chance to catch up. So, if we were looking at, like, let's say a top tier company, but also the mid and small tier companies in India, I'm more hopeful of small and mid-tier companies, because that's what has happened in Europe as well. Like, if you really look at the open source Right. model, which are coming out of Mistral, for example, or News Research, they are really, really small companies, and they have made it such an impact on this particular sector is mind blowing. So, like, how do you see that particular sector from investor point of view, as to what could be your projection? Let's say, I mean, 5 years is really, really long in this particular sector because the way it is evolving. So in like 2 years, like, from your point of view, what do you see happening in that sector? Any candidates that you see are really great emerging candidates? Yeah, I mean, see, first thing is we have to see with the context that probably if there is a, if it's a big if, probably if there is a rate, this question itself becomes a little bit irrelevant for a shorter period of time, because everything and anything will run, and that's what is currently happening in that space. Nobody is really trying to understand the positioning of a small cap company, and we touch based upon that. And there are lots of IPOs coming in, so it's very difficult to study these many companies, get your understanding on how exactly these companies are different from, let's say, another peer, what is the right to win, and so on. So that's why the way I approach this is basically, and the conclusion I have is, over a period of, let's say, 5 7 years down the line, after this, let's say, this cycle, the rate cut cycle and all that settles down eventually over a period of time, probably the at least 70 to 80% of the SME IT companies will probably not sustain the returns that they have generated. It's very difficult. So that's why the way I study it is, first again, the management, because I have tried to study a lot of companies, I have listened to a lot of management interviews. And one thing I find common is there are only two types of management. One management is something that they give like out of the world projections that we will be able to do this, do that, and that you carry. If you ask some technical questions, then these companies usually don't answer in a very investors friendly manner. So such companies I outrightly filter out, think that no, I don't want to venture in here into it. And one thing which is happening very closely in this space is all these anchor investors who are invested in these companies pre IPO, they kind promoters create a perception about the performance, and it happens all the time in all these small companies. So management ends up giving some guidance that we'll be able to do this, do that, even though the promoters are not that very confident about it. But because of the pressure from the anchor investors, they end up giving some guidance, and then stock performs, and then anchor exits, and then the promoters have to start that credibility building again from the scratch through the execution. And in that process, probably they will fail, they will not achieve the guidance that they gave.
एंड मार्केट देन वो छोड़ता नहीं है, देन वो ड्रॉडाउन जो आता है वो काफी सिग्निफिकेंट आ जाता है वहां से. सो व्हाट आई एम लुकिंग एट दिस मोमेंट इज फोकस एंड moderate growth expectations. So जाता है, so I get into that and I study some companies, and to be very honest with you, सारे पैरामीटर्स पे सारी कंपनीज कभी भी टिक नहीं होती है. कई बार ऐसा होता है when the bull run is going on, your expectation is if I'm investing in a small and micro cap or SME companies, मैटर 5 साल के बाद कौन सा कंपनी रहेगा, रेवेन्यू से कल को जाके माइक्रो कैप बनेगा, माइक्रो कैप से स्मॉल कैप से probably मिड कैप बनने का कैपेबिलिटी रख Sorry to सकता है. come That's in between. I mean, your voice. too much extrapolation. So, Ameya, Sorry? you're breaking in between. Could you please Oh, check your? I mean, there were few seconds of lag while you were speaking. Was it with me okay. or everybody was experiencing it? Yes, Prince. I think I thought I had a problem and I didn't want to intervene, but I mean, yeah, I missed some really good. So, So I'm also going to go to the record. so Ameya, what you just shared for last 3-4 minutes, there was some lag of few seconds in between. If you can, I mean, try the network or maybe try dropping once and joining again if that helps. Okay, I'll try. And we all should like tag X spaces and definitely like tell them to work on these glitches, because these are very disturbing when the ongoing discussion is very good in all aspects. Yeah, Prince. I mean, this has been my complaint all the time because I mean it glitches so much, and you have such great inputs coming in from people. Samya, are you there? I can see you as a speaker, but unable to hear you. Yes, Samya. I can. Okay. But somehow I still hear my own echo. Not sure why. Not sure what's happening. I can, I mean, hear you, but you are still showing as a listener on the screen. Anyways, Oh, I think if everybody is able to hear you properly, so good to go. okay. All right. So I'll just wrap up the answer to the previous question that Umesh had. So uh, only couple of things which primarily to look at is the management focus. जो ज़्यादा unnecessary आके मुंह खोल के guidance ना दे. Anybody coming in saying that I will double, triple my top line in these many years, usually मैं थोड़ा सा cautious हो जाता हूँ. Because it's not easy. ऐसा नहीं है कि industry sunrise industry है. It's a very saturated industry already, so it's very difficult to actually make inroads after you have grown to a certain level, right? So always take it with a that understanding. And second thing is again the focus of that management. So I prefer capability over scale initially. That's again me as an investor. That's what I look at because I think अगर capability है तो over a period of time scale will eventually come. पहले से ही scale को अगर target करेंगे तो then we'll become kind of a diversified company and not have a very well-defined capability into any product portfolio. It's very easy to actually, have a platinum certified partner alliance and all that. इतना कोई difficult चीज नहीं है वो achieve करना, but that means nothing. Yeah. It's just आपके थ्रू जो कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो डिस्काउंटिंग वगैरह का एस्पेक्ट आ जाता है बिकॉज इफ यू आर हैव अ पार्टनरशिप विद लेट्स से SAP or Microsoft. And then
that's it. I mean, that's what I focus at. If the company has a capability to transition from, let's say, SME to a micro cap to small cap, and then eventually come into a main board, that is where I'll generate the maximum alpha. So I try to look at that. The very thesis to invest in LTI when it IPO'd was the same thing. Was expecting that it to be top four, top five companies down the line to be part of Nifty 50. But again, if you see, it took almost 7 years for that to happen. It will not play out immediately. It will play out over the number of years. So that's how I look at the companies, and I really don't want to give out names because in case you're ऐसा है कि I am invested in such companies and I don't want to create a perception that I'm talking about those companies or those aspects only because I'm invested into it. ऐसा नहीं है. So I would say if you are studying a small micro cap company or SME company, uh, a very good metric is how promoter is, giving out guidance. And second is how well defined capabilities do they have. कोई आके अगर बोलता है कि हमारे पास में ब्लॉकचेन का सॉल्यूशंस है, हमारे पास में क्रिप्टो के डेरिवेटिव के प्लेटफॉर्म्स है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क इज इतने छोटे स्केल पे हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट टू सोर्स अ टैलेंट. It's not easy to have a talent working technically in that space जिसको नो कैपेबिलिटी ब्रिंग करता है टीम में. तो ऐसा टैलेंट को एक्वायर करना, सोर्स करना और उसको आपके पास में मेंटेन करके रखना इज नॉट इजी. सो इफ लाइक 50 करोड़ 60 करोड़ का आपका प्रॉफिट है एंड देन यू आर सेइंग दैट हम लोग ऐसे सारे फ्यूचरिस्टिक चीजों में काम कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ मोर ऑफन देन नॉट ये सिर्फ एक परसेप्शन मैनेजमेंट होता है, राइट. एंड देन अनदर एस्पेक्ट टू लुक एट इज जो यूजुअली ऐसे स्मॉल कंपनीज होती है उसमें अगर इफ द कंपनीज आर driven by people who are coming from a very specific technical background and they are ideating a product, तो उसमें ना एक रिस्क होता है जहाँ पे इंजीनियर को हमेशा लगता है कि मैंने क्रिएट किया हुआ जो डिजाइन है वो सबसे बेस्ट है. वो कस्टमर को सही लगता है नहीं लगता है ये एस्पेक्ट वो बहुत बाद में अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, करेक्ट. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस, सॉरी केस स्टडी. आप अगर देखोगे तो there is a book called Monetizing Innovation. I don't remember the author, sorry, but the book's name is Monetizing Innovation. तो उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी दिया हुआ है डॉज वर्सेस पोर्शे का, जो एसयूवी आया था. तो that kind of a situation also happens in some of the small micro cap SME companies where promoter think too highly of the products and the services that they're offering, but there are not too many takers for that in the market, right? So that aspect was also something I would like to study. Also, Prince, we will try to wrap up in some time because my throat is not in a good shape. Not in a good shape. Maybe you Sure. can take Maybe the you can questions and I take will the answer them questions one by and one. I will answer them one by one. Yeah, sure. I'll take from the comments few questions and then we close for the day. And for our audience, like as Ameya was saying rightly, the names discussed are purely educational. You won't understand the moving point. You won't think beyond a name, so that will harm you financially and mentally as well. तो सिर्फ educational purposes के लिए जो discussion है उसको starting point लेके चलें और add to your knowledge, not to your portfolio, right? अगर समझ में आता है तो बाद में financial decision लीजिए. Don't go by simply listening name from these discussions. So Ameya, one question is from his name is Ajay Modi. He is asking your view on Sistango as they recently opened a subsidiary in US. Okay. And View on Sistango. I'm not Very positive small on question. Sustango for the very same reason. I'm not positive on Sustango for a very same reason. Again, and when I was talking about the blockchain and the crypto derivative platforms, I was indirectly hinting towards it. So not very keen on the company as such. See, opening a subsidiary, opening an ODC, opening a research center, and all that. ये सारा चीजें, these are like routine activities for a company as they continue their business. So I don't think you should read much into it. Rather, the question you should ask to the management is, why do they
want to have a crypto derivative platform? Why do they want to work into a technology जिसका अभी तक कोई ज़्यादा productive use case market में आया नहीं है? How many takers are there, right? So these are the kind of questions you should ask. And you are based out of Indore. How are you sourcing a blockchain talent in Indore? You look at your top line, look at your bottom line. How are you sourcing? Just because you come from a Goldman Sachs doesn't mean that you know this space. But rather, I think what should happen here in this case probably or will happen over a period of time is if they get a good investor on board, जैसे already शायद आशीष कचोलिया जी आ चुके हैं investor. If he somehow starts grooming the management, change their perception about how to run a business, change a course of direction, उनको थोड़ा सा कन्विंस करके कि बाबा ठीक है, आपका जो आपका जो नो हाउ था वो अलग है, लेकिन ये अगर बिजनेस करना है और इसको स्केल अप करना है तो आपको वो सब भूल के आपको कुछ और करना पड़ेगा. So if something of that sort happens, then probably Systango will do good. But then that's an aspect I'm not really keen to risk as of now. Right. So next question is like happiest mind was the talk of the town in 2021. So has anything changed in current perspective? No, no, nothing. ये small west effect था, अशोक सूटा जी का नाम था. क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग थी, क्या डिफरेंशिएशन था, क्या राइट टू विन था, आई स्टिल डोंट नो. आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड देयर. Okay, so all you have covered this, but again, Amit Kamath is asking, is Nippon IT ETF fund a safe way to invest in IT sector? Obviously, specific question about fund we won't be taking, but ETF is a good way you were talking about, right? Yeah, sure, why not? Right, and your views on management resic at Signity and news regarding PE takeover. Also, your confidence in companies pivot to ER&D and timelines to watch out for that. So Signity, business wise, I don't see that there is any challenge as such. I also know that they are piloting a product platform, again with this service now and some Gen AI based services, but it's too early to talk about that. But yeah, एक general sentiment है on the street that management would probably want to exit the business. Some PE investors should take over. Uh, may probably happen at a premium to the current market price. That's what the word on the street is. But again, that's the word on the street, right? So कंपनी अच्छा है, ऑफरिंग्स अच्छे हैं, वेरी वेरी वेल डिफाइंड ऑफरिंग्स. ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड है. क्वालिटी इंजीनियरिंग इज अ वेरी नोबल नेम गिवन टू द टेस्टिंग कैपेबिलिटीज, बट उसमें भी काफी वेल डिफाइंड कैपेबिलिटीज हैं इन लोगों के. दे कम इन एट अ वेरी स्पेसिफिक स्टेजेस इन द प्रोडक्ट, इन द रोल आउट. सो बिजनेस में वैसा कोई मेजर इमीडिएट इश्यूज नहीं है, बट या द मैनेजमेंट ट्रांजिशन इज वेरी वेरी वेल नोन इन द इमीडिएट सर्कल. And probably that will happen over a period of next year or so. And most probably the investor will come in at relatively higher premium to the current market price. But nothing more than at the moment. Uh, ER&D वाला क्या question था, Prince? One second. Yeah. Also, your confidence in companies pivot to ER&D and timelines to watch for that. I Any think specific incomplete company question. is talking about it? No. This question is in continuation to the Signity question, so no specific companies mentioned after that. Okay. Anyways, we the question properly, and meanwhile we move on to next question. So he's asking about the IT training company. Are you tracking any other IT training company other than NIIT, and broadly like how you see the business economics of training companies? सी ऑफ कोर्स एनआईटी को थोड़ा पढ़ा है, उसके बाद में विंसिस का भी एक सेगमेंट है जो आईटी ट्रेनिंग में है, एंड दे आर ट्राइंग टू kind of position as a software services provider company, leveraging their experience, or let's say the sourcing of talent or adoption of the technology that happens through the tech through the through the training side of things.
बट सी यार, मैं पहले भी उतना ज्यादा ट्रेनिंग के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, वो मोमेंटम था जिसके साथ साथ चीजें चल गई. But if you see all these big companies, they usually have their own in-house inbuilt training systems. They no longer have these external trainers to come in and then ये एक छोटी स्केल पे होता है. लाइक आपका अगर 8-10 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है तो probably you will always have external trainers coming and then they will actually execute in the trainings and all that. But as and when the scale of a company grows, they usually develop their own in-house training platforms. इसका प्राइमरी रीजन ये होता है कि ये जो आप एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स लेके आते हो, ये बहुत जेनरिक ट्रेनिंग होता है. ये ट्रेनिंग का आपके जो ऑन प्रोजेक्ट आपको जो एग्जीक्यूशन करना होता है उससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, राइट? It's like you know ABCD, you know grammar, but ability to write a essay, let's say in a GMAT exam, and that will give you 6 on 6. That's a very different thing, right? So training case में I'm not that very positive, to be very honest with you, because इतना कुछ उसमें इतने सारे कंपनीज है ना. आप जैसे आप अगर छोटे टाउन्स में भी जाओगे ना प्रिंस, यू गो टू हैदराबाद, प्रोबब्ली दैट्स द बिगेस्ट क्या बोलते हैं ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड इन इंडिया, राइट? सो इतने सारे छोटे छोटे कंपनीज है. एज यू गो डाउन, यू नो थोड़ा नीचे के टीयर्स में अगर आप आके देखोगे तो उतना ज्यादा आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव. स्केल का भी एक चैलेंज होता है वहां पे. आई नो सर्टन कंपनीज दे ऑलवेज हैव सम और द अदर ट्रेनिंग पार्टनर फॉर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, बट देन अगेन वेयर इज द स्केल? आई कंटिन्यू आस्क द सेम क्वेश्चन. सो मोमेंटम में है सेक्टर, प्राइस परफॉर्म कर रहा है तो वो एक नैरेटिव का बिजनेस के साथ में अंडरस्टैंडिंग अपने आप बिल्ड हो जाता है. बट दैट्स नॉट व्हाट स्केल इज, राइट? स्केल ट्रेनिंग के बिजनेसेस में उतना स्केल नहीं है. इट्स वेरी सैचुरेटेड मार्केट. दैट्स व्हाट माय व्यू इज पर्सनली. So last two questions, Ameya, or shall we keep these questions for some other quick session of 30 minutes or 45 minutes, whenever you are comfortable? We can take a couple of questions. Okay. So Vishnu Nair is asking your view on Quick Heal Technologies as Sequerite is taking a center stage and gaining traction in the market. Sorry, I'm not tracking Quick Heal that closely, so don't want to actually give out or talk about something which I don't know. So maybe I'll check Yeah, and then come back to that question little later. sure. And Chintan Patel is asking also, what's your view on AI products by IDA? Are they really value creation product or just layers or stack on other platforms? Yeah, nobody's creating any AI product. Let me just put it in a very blunt format to you. Okay, nobody's actually doing it. क्या होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है एंड देन यू पोजीशन दैट योर प्रोडक्ट इज एआई रेडी. तो आईडीए के केस में उनके प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज, कोर प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं. बट वन थिंग विच आई डोंट फाइंड वेरी गुड इज अबाउट हाउ देयर मैनेजमेंट कीप ऑन चेंजिंग द एडजेक्टिव्स. वो पहले डिजिटल रेडी थे, फिर डिजिटल नेटिव हो गए, फिर अभी एआई रेडी है. लाइक आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. Integrating, let's say, the open AI services or any kind of AI services is the one different thing. But I don't see that they have any kind of indigenously built AI product as such. It's not easy to achieve scale in AI itana short span of time mein. Okay. And the comment is made from Pramod George. He's saying, my opinion, IT companies will spend less until they figure out how to leverage AI. Once that happens, manpower expenditure will reduce drastically. Big companies dissolve. Smaller expert teams capable of delivering high quality results for half the price will become the norm. So you buy this statement or I don't know. It's too early. The situation in tech is so fluid that you cannot have a very rigid view कि ये होगा ये होगा. We don't know. We just don't know yet. It's too fluid. You have to keep on assessing it from time to time. okay? And यार buy sell के question मत पूछो, but again he's asking Vinces के regarding all Twitter big players have sold their holdings. Any view on this?
That's a fact. So, and that's what I was actually hinting at when I said about the anchor investors coming in and then making promoters. So basically, that has happened in this case as well. So see, promoters बहुत अच्छे हैं Vinces के. There is no doubt about it. They also have a second gen. They're ready to actually get involved more in the business. So ऐसा नहीं है that the promoter is not good. Business will probably continue to do very well. But again, दो चीजें हैं. दो जैसा है ना कि what they're trying to do is um, at that small scale, access to the technology, access to the resources becomes a challenge. And what they say is because we have very long lasting contracts with more than 600 customers or so, um, bade customers like IBM and all that who are with them since quite a long time, for 2 decades or so, they have access to both technology and resources. So probably they will learn from the training initiatives that they are executing for such companies, and then leverage that experience and start building their software services segment. I don't have any concerns कि ये नहीं होगा, but then again उसमें scale थोड़ा सा challenge आ जाता है, and then uh, it it doesn't give you a right to win just because you have access to the technology and resource. What you do with that also start execute कैसे करते हो, ये चीजें बहुत अलग 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 मैटर है. सो यार सोशल मीडिया में कौन इंटर करता है, कौन मतलब लाइक ट्विटर पे लोग क्या बात करते हैं, आई कीप अ टैब ऑन इट. दैट्स व्हाई आई डोंट यूजुअली गेट इनटू कंपनीज वेयर यू हैव ऑल दीज बिग गाइज इन्वेस्टिंग इनटू. ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्टेड है तो मैं जाऊंगा नहीं, बट देन my parameters to look at a micro cap IT company is very different, and I keep on finding मेरा अटेम्प्ट यही होता है कि ये कंपनी को मेरे को ना बोलना है. तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि ये कंपनी मेरे को हाँ बोलने के लिए कैसे कन्विंस कर पाती है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स दैट आई हैव. और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई कंपनी फाइनली फिल्टर आउट होके आती है, बट फिल्टर आउट भी होती है तो फिर वहां पे मुझे सीएजीआर के जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो थोड़े से टोन डाउन करने पड़ते हैं. बट अगर मुझे स्केल अवेलेबल दिख रहा है कि स्केल एक्सपोनेंशियल है, तो मैं थोड़ा सा सीएजीआर में अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज भी करना है तो आई एम हैप्पी टू डू दैट, right? Because if you have a company who will have sustainable top line even after 2 years, 3 years, 5 years, I am actually happy not to have 30%, 40% CAGR SME in my portfolio. I'm happy doing that. But that's me as an investor. मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लेके ऐसी चीजों में नहीं जाना है जहां पे मोमेंटम है और प्रोमोटर्स कुछ भी अनशन बात कर रहे हैं. We don't want to get into these kind of things. So that's why what matters is what's not going to change. So true. Right. Yeah, Ravi, quick question before we wrap up. Yeah, go ahead. Yeah, Ameya sir, one last question. Do you have any view on data analytics and data synthesis firms like Traction? नहीं सर, मैंने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया. आई रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट इट. Yes, I sir. think when we met in Yes, Delhi, sir. that time also we talked about it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I very briefly glanced over their offerings, and looking at the kind of offerings that they have, Yes, sir.